So, hey, yeah, everyone, welcome to the today's webinar. So, I am Sushant, your host for the today's session, and today we are delving into to get a deeper insight about the B2B fintech industry, and what could be better than learn about this emerging field for the expert for the one who have explored it quite deeply. So, yeah, we are honored to have Amit Kumar, the CTO and the co-founder of Amit Easebuzz, as our guest today. Uh, Let's have a clap for the Amit sir. So, Yeah, yeah, hi. hi sir. Hi So, everyone. Good morning, and thanks for joining on Saturday. Uh, I imagine, I assume that everybody's having a nice weather outside and they are sticking to their laptops or the screen. Thanks for having patience to join. So we'd want to make it a fruitful session. So and I would encourage that if it's an interactive session where anytime anybody has any query around any of the component, any of the function, please feel free to ask. So how we have kind of structured this and kind of uh, uh, you know uh, kind of dynamics or the kind of growth which we have seen and noticed witnessed in this country is enormous. I guess everybody is witnessing or everybody is experiencing that kind of transformation around them, while nobody is probably carrying wallets right now. Nowadays nobody carries wallet. right, Everybody is so much reluctant on using the digital modes of not just payments. There are other embedded finance journeys which has been established and making life simple for the users. So I will delve into how the fintechs are transforming the ecosystem around us, environment around us. What is there to which is B2C? I'll not get into the B2C part of it because today's session is around B2B. So we'll delve into B2B. What are the components? We'll not get into the other verticals or the components. We'll probably focusing on the procurement, how financial services or a fintech company can help procurement company and to streamline not just their operation, to to make the whole business process of procurement simple, smooth, and transparent. uh, with changing times and the scale, there are enough challenges which is coming on which needs to be solved to to make any business profitable or sustainable. So I'll be sharing my screen. Let me know if you can see my screen. As the Amit said, if you have any questions in between, you can raise your hand. We'll allow that. Yep. yeah, it's visible, sir. Yeah. So first of all, I'll quickly introduce Easebuzz so that you everybody kind of understand, knows how Easebuzz is relevant to the market where we are located. So we are one of the payment aggregator, one of the top five payment aggregator, established in 2014. Operation started during 2016. So we have 100, more than a lakh 25,000 businesses onboarded with us, which consist of large enterprises like Tata, Amazon, and MSMEs. A huge customer base with MSMEs and SMEs as well. So we are processing more than it's now 14 billion annual GTV rupees or the dollars per se. So we are processing more than 15,000 crores every month. So we are near to 5 lakh to 10 lakh transactions processed every day. Our mission is to bring transparency in the not just in the payment ecosystem, with the whole reconciliation and the compliance and the regulatory aspect, wherever the payments and the settlements are concerned. So we are not just limited, our services and the products are not just limited to the collection services. We are also providing a lot of other services around payouts, and how we have kind of placed ourselves differently, that we have looked at the payment problem as a vertical problem for a particular domain. So
that kind of differentiates us apart from other payment gateway players like Razorpay, Cashpay, or BillDesk. The core difference is that they have looked at the payment problem as an horizontal layer, where whatever their offerings, uh, keeping the problem statement in their mind, saying that they are here to improve the payment efficiency, which tells that lower clicks, faster transaction time, and lower latency. uh, we have defined our problem statement saying that we are here to improve the overall collection efficiency, which has broadened the scope of payments. And how we have done that? That we have looked at the vertical and like education, insurance, procurement companies. So if we looked at the vertical, then payment also kind of intermingled with the business processes around, and which makes it more complex, right? So so we go beyond solve not just payment, we also bring those business workflows embedded in the payment journey, so that we solve a larger problem of the business. And that's how we have grown. We have been maintained profitability since inception. So yeah, so in this space where payments are very thin margin business, we are able to maintain profitability. That's testifies that our value offering on top of payments really kind of end up solving merchants or the businesses core interest, and where they do not shy away in paying for those services. So these are uh, kind of clientels, few of them only. We are also working with government. We are processing taxes for e-grass account for 5 states. We are processing direct indirect taxes from central. So yep, you would find us while you are paying your company tax on CBDT portal. You'll probably find us. Yep. So as as uh, any queries around? Yep. Okay. Fair. Fair enough. So as we have kind of spoken about, the kind of transformation we are witnessing around us, the large part which has happened till now is B2C payment, where a customer is paying, or customer is availing a services, and and in reciprocative, they are paying, or they are providing their consent uh, to the uh, to the businesses which they are using. So if we are not paying for some services, we are sharing our data. That is the interest for those businesses. So if I am availing a free service from probably Zoho, probably Google Pay, or somewhere, anywhere I am paying, I am kind of availing a service. We are paying by either paying money, or either by sharing our data. So in any case, we are paying something to any of the businesses. That's the core interest of the business. So where B2B payments, and this is a quite older data, but still that's quite relevant because the number is quite huge. This is in trillions. So if you look at B2C payment still consists of one third of what the overall size of volume. Two-third is still the B2B payments, right? Which is still unregulated, unorganized, or you can say it's organized, but it's undigitized to a large extent. So that is where uh, the business opportunities are rising, and I'll tell you why the business opportunities are not just in terms of number. It is a viable, there are many viable business model which is coming out to cater to this demand. And what are the challenges? So in B2C, we typically see smaller ticket size. That's the benefit of B2C, and that's where and it's the core interest of any India, any economy, that customer and the business interactions are regulated in a way that where customer's sake is always protected. Hence, the customer always you know uh, the trust on the economy from the customer side always remains. So that's where the core focus is to protect customer sake.
to to enhance the trust which is building upon this ecosystem, whether it's a digitization or the e-commerce, boom. In any case, the trust has to increase. Then only any initiative can survive. So that is core element of anything. So B2C has been focused very well. After in past few, I can say decades. Sir, It's sorry to interrupt you. We have a question from the audience. Yep. Yeah. So can you read it? Yeah, so Uh, I have a question. So, right. So, so I've raised the hand. So, so when we say B2B payments, Amit, so present way and the mechanism are limited to NEFT, RTGS, and these are the only things, or but I'm just looking at the present status quo, right? Our understanding of B2B payments are these levers which bankings have, B2B, RTGS, NEFT. Is there anything else presently when we say B2B payment? So definition of B2B payment with specific ki kya hai abhi, if you Right, can. right. I'll come to that. So basically, so all of these B2C payment modes are typically supporting the large set of customer. So scale is high, but the ticket size is small. So there are different regulations for them. For B2B, the core, as you rightly spoken, the core payment modes which has been used and popular were IMPS, NFT, RTGS, right? Uh, but I can tell you now the huge. We have 85 million online businesses, or you can say it's more than 90 million businesses operating in this country. Not everyone is having this, their you can say operations very smooth, and their working capital requirements are huge. So with MSME, SMEs, the working capital is the largest, gap, which has been covered by to some extent by commercial cards or invoice discounting methods. That's why, if you look at, there are 140 companies who are operating in this space, like Paymate, BharatNext, Paymetrics, VoloPay, Ncas, EVX, CAS, Happy. If you might have heard all of them, because the point is that if you are working in a very large corporate where they are cash rich and they do not require credit or the financing support, they probably have still riding on these legacy payment modes or legacy systems, legacy approach. But uh, all of these newcomers, new startups who are arising, who are riding on scale, because everybody, in Indian ecosystem, uh, the the price sensitivity is so much that it decides the survival of any entity. So price sensitive, to beat the price sensitivity, there are other mechanisms which has come, to help all of the businesses. So I'll touch upon 2 points, like and which will answer your question. So of course, there is a huge market of commercial cards, CUG cards, or BPSP program, where these businesses are, you know, are getting a working capital or credit line for their operational needs, and and that becomes a core offering, for them. Currently the complexity, so I'll come to the second point. So one is the working capital support, which is the huge demand for any fintech to be in this. But while the payments is concerned, these businesses also, kind of now, all of the businesses are making their business model complexer. So if I speak about, suppose Udan. So Udan is, one of the B2B, you can say, have one, B2B business model, where they have a lot of retailers or distributors in their, leg, where they are catering to them with the set of supplies or enhanced, list of items, where they choose the product and they procure for them and they can supply, or all of these. So they have huge chain of suppliers as well. So to maintain all of this, and they are coming down with different kind of schemes, different kind of models,
they're operating different geographies, which is making their business model complexer. So if I speak about the kind of services which gets overlapped while they try to capture market, they try to beat the competition, the level of complexity arises. So and since this is a price sensitive market, if you know the level of complexity rises to that level that even there is a 0.01% efficiency comes into the ecosystem, they run into losses. So one typical example which everybody can imagine feel, that we order from Dunzo, we order 11, 12 items from Dunzo. It's very quick. I can order it right now and get the delivery in 40 minutes. That is there. But if we speak that the Dunzo guy has procured 4 items from their inventory, which they have kind of maintained, regular items. 4 items they have to, procure it from the nearest kirana or the grocery store, which they have tied up with probably. 2 items from the dairy, which was I have added some fresh paneers from them, right? So and that is specifically for the paneer, and probably 1 item from the street vendor, the coconut vendor, and they have picked up coconut from them. So now if you look at that 11 items, 4 items from the one from their store, 4 items from a grocery store, 2 3 items from this, probably 1 item from medical store because I have added over the counter medicine. So, ultimately, such the orders, accumulate up to 25 lakh order in the month end. And suppose if this guy does, mistakes in entries or do some, miscalculation in his part, can you see that these 25 lakh order, even 1 rupee mismatch in one order can escalate up to, 25 lakh rupees, and that scales up to, so, bringing, that's why that's what I am pointing out, that when scale come, it becomes very difficult to meet up the reconciliation challenges, and any leakages or any discrepancies not just hurt the PNL of the company, it also hurt the sentiment of customers and trust on the system. So if I speak about, if you look at many of the businesses are just been कि नहीं यार वहां पे तो उनके पास ठीक से ये नहीं मेंटेन होता है, या I have some experience with Ola Money where sometimes I have paid and then there is no reflection which has done, and then it leads to unsatisfaction where organizations normally, while they satisfy the customer, they end up paying large amount, right? So that's where the workflow efficiency needs to be catered first. So my point is that business models will keep on getting complexer day by day, and it will get to another level whenever it scale or the company is replicating in other geography. This is inevitably going to happen. So the payment part is still small part, but the reconciliation where the taxes should meet, where the models like where I have suppose I'm Subway and I have a franchisee model with me, and I also own my own outlets. I also operate online. I also operate on Swiggy, Zomato. I also operate on some other models. Can you imagine type of complexity that everything should reconcile? Even in franchisee model, what are the GST implication which needs to come? And if you heard that Swiggy, Zomato were in the GST soup earlier, right? Because delivery service comes with different taxation, and the grocery comes with different taxation, and the foods and restaurants comes under different GST calculation. So that's why this has to this has to uh, this has to be solved there itself, transaction wise, rather than it cannot be solved at the accounting level, right? So that's where and it's very difficult, because we operate at a scale. We understand that we are reconciling 10 lakhs transaction today. Suppose at the month end I have 3.4 crore transaction
happening, and there are thousands, lakhs of refunds, there are lakhs of chargeback, lakhs of partial settlements, all of these business models. So if I want to reconcile everything at the month end, it is impossible task to do, right? So I have to do everything on the same day with every transaction. I'll fail to meet up my efficiency criteria, right? So that's the important part of it. Second, the biggest need which is arising because of the government is formalizing all the businesses. So the ask of government from all of the businesses are that they should comply with all the regulations, like from GST or the Company Act part, or any other policies or any other regulations which has been imposed to the particular business. They should comply to it. But how would they comply if they do not have workflows inbuilt in their ecosystem? that is the that is the largest need which is arising. That's where we have seen these challenges that we have come across such observation from these agencies or these businesses which we are trying to. Yeah, please. So there's a question from Sujoy. Yeah. Wait. So my screen is on presentation mode. So Yeah, I got it. I'll do that. Yeah, Sujoy, go ahead. So you can on your mic. Yeah, hello everyone. So, like, sir, I had a question: ki how does easebus cater to these challenges that are arising every now and then due to the changes in the policies of the governments? right, right. So, first part is the know-how, right? That you know the challenges, you know the regulations, abide the compliances. So there are three type of compliances, like which is covering three types of risk. So one is the financial risk. Second is your corporate governance. So where Byju's and all of these kind of got messed up. Uh, Third is the risk coverage, right? The risk coverage, can be a reputational risk or any other risk which might arise. So thing is, to to cover this, we are one entity which has been not just sorry, third was the IT security, right? So we are working in digitization space, digital space. We need to we need to provide that kind of security to customer or the businesses so that they can trust on the system, right? So to cover all of this, we as an entity, we undergo a lot of audits. We are ISO compliant, we are SOC 2 compliant, we are PCI DCS compliant. That to highest level of security compliance we have kind of received. We are RBI regulated, so there are 2 or 3 RBI audits which has been conducted. So when any entity says that they are RBI regulated, that means they are maintaining the high level of compliance and regulatory posture. So that's which comes to the point where how we are solving it. So how we are solving it is like this. So we have been doing this merchant onboarding, onboarding KYC, FRM with which is aligned to RBI guidelines, which has been recommended for banks, for us, for NBFCs. So that has been implemented, long ago, and that has been followed. And it's very difficult to get all of these components built and operate with this kind of posture. So this is how we kind of help any business, any you can say entity, like it can be Tata, where we are helping them in maintaining unified dashboard, unified transactions, giving all the transparency to one entity, that what is happening in Tata AIA, what is happening in Tata AIG, or what is happening in Tata Titan. So there are different set of problems they run into, and how you would be able to solve them. So there are many discussion which is going on, but to just give you an example,
I'll give you one example, and you relate how business problems are being solved with with us. Uh, Suppose Big Basket, the Big Basket are very old customer since 2018. So Big Basket is this particular problem arising in 2020. They started their B2B like Udan model, where they are they are providing a product and services to the small retailers or the conventional stores, right? So and so there are typical challenge which they were facing, that if they are providing products to the kirana, so they have their own app for it, where the kirana or the store can order from Big Basket. Then that app is called BB Mandi, where that is the B2B product, B2B marketplace for them. So when they place order of 5,60,000, suppose, and it consists of several items, right? So suppose 5,60,000 order. So what was the typical problem which they were facing? First was the customer behavior, which was that this customer who is a Rajasthani or Mawardi guy, he did not wanted he did not want to transact this 5,60,000 via any other payment app, or so they do not trust any system, right? So what they typically want to do is they want Big Basket to share their account number details, so that they can add their account number in their bank account as a beneficiary, and they will transact to that bank account 5,60,000. That is the first challenge. So what was happening with this problem was everybody was adding Big Basket, main account as a beneficiary, and they were transacting amount to that account. Now the reconciliation became the biggest challenge. So suppose when I was doing 15 order per day, it is still manageable. One accountant, two accountant were managing the stuff. Now when it scaled to 1 lakh transaction, 1 lakh orders per day, now it was impossible for them that to reconcile that which order and which amount has been kind of arrived, right? So that was one big problem which was happening. Second was that Big Basket was unable to provide any flexibility in payments, like no payment amount. So if the order is for 5,60,000, they can only reconcile when the transaction has been done with 5,60,000 amount only. Otherwise, they will not able to reconcile things. So the flexibility any business would get, suppose the flexibility Udan was giving, suppose is giving, that you pay while ordering, you pay just 2 lakh, and then after delivery you pay 3,60,000 rupees. That is still kind of a better way where customer gets the comfort, right? So so that was something which was missing with the Big Basket. Third was third was that there are different stakeholders involved, right? So the different stakeholders, like the business who is ordering, the order team which is receiving order, the finance team who is confirming the payment, that warehouse team who will prepare the delivery order order you can say order items, and there is a delivery team also who will pick up the order, and he will deliver they will deliver it to the business, right? So there are 4 5 stakeholders involved, and the problem was with the payment reconciliation, and it was leading to that problem that warehouse team doesn't know when to prepare the order. Sometimes what happens, even the order has not arrived, they end up in preparing the order, right? They accumulate all the data, and for a day, for 2 day, they do not get the confirmation that the payment has been arrived or payment has been realized for that for order. So the order, if order consists perishable item, then there are losses which they were facing. Second is that with this, typically this large size of order or payments or orders, what happens? There are some some items goes missing while it is being delivered. Some items go you can say they get damage while the delivery is happening,
or some items have been realized that they have been added mistakenly, so business refused to take it at the time of delivery. Or in all of the case, the debit note and credit note maintenance is making it more complex, right? So what we have given them, we have given them the approval. So these workflow layers, right? This reconciliation workflow layer, where now what happens, and that's still in discussions. So whenever there is order made, the customer gets a unique account number for that particular order, or the customer gets a unique account number for them, you know, forever. So if I am a, Archana, store, or Archana conventional store, so I've got a virtual account number specific to me already. So I have to add one beneficiary in my bank account. Now, when I am placing an order, it can be with 5,60,000. I'll go and transact 2 lakh in the account, and I'll reconcile that this guy has probably made one order or two or three orders, and against which order there has been some payment which has come. So I am maintaining ledger. So even if they are placing two or three orders, I'm still able to reconcile partial payments. So I give them a kind of option where they can choose that first in first out, like as and when order has come, that will get knocked off, or I give them the penalty base. So whichever invoice has got penalty involved, that will knocked off first. So all of these algorithms has been built in this system, and that has been given to Big Basket. So that is solving their problem. The payment flexibility and the reconciliation is solved. Third is credit note, debit note. So that has also been solved in some way, in that whenever there is a item missing, so there is a approval flow, gets executed, where the delivery team has to confirm, the warehouse team has to confirm, and then it will get directly reconciled to the ledger directly. It is totally automated. Nothing will move on emails or any CRM, other CRM. So that's something which has really brought in efficiency in this ecosystem. Uh, we have one more question from the audience. Yes. So, Sushant here. So what you spoke about Big Basket, it's a receivable thing, right? Now, and I'm just wondering, it's a problem because they will not be able to understand from which account it has been credited. But the solution have for payables as well. Say, suppose Yes. the multi-party, because I'm asking from the use case which we are facing. We have receivable, I think, is consolidated, but payables are like more dense integrated. Right. So Right. our problem statement is more toward payables. So I'm just thinking, does the solution covers payables as well? Yes. Because uh, yeah. Yeah. For particularly Big Basket, payables was not very much the problem, because that was extensively managed by them already. Right? They had already built this. But when we were dealing with Flipkart, it is a problem. So Flipkart wholesale, where Walmart has decided to give it back to the Flipkart wholesale, and they moved out. So it happened in 2018 or 19, I guess. So Flipkart wholesale, the use case is, so they have thousands supplier, and now all of these suppliers, they just not have to kind of help them meet their requirements. They also need to maintain you can say they wanted to run a loyalty program with them as well, so that the stickiness with them increases, right? And not just stickiness, it's a relationship building exercise. So there are two part of it, like the orchestration of vendor payments invoice. Uh, we are also kind of in discussion with them, where corporate CUG program can be rolled out, where the anchor, like this Flipkart becomes the anchor. Their suppliers, become who are the who are the supplier, and Flipkart is acting as a buyer here. So what happens typically, and it's the interest of their finance team,
that they get a a credit line of 5 crores rupees, suppose. So for this 5 crore, they can pay to their supplier instantly. And in terms in while they do this, they get a 90 days or 45 days of credit line. Flipkart gets it, and the supplier gets their payment instantly. So that makes their relationship healthy in that front. Who is bearing for the credit card charges? That gets distributed. So there are newer setups which has come, like one is corporate CUG program, where the transaction which is happening, that is the owner's transaction, where the charges can go down to 1%, 1.2%, for that transaction. So if you look at for 90 days period, 1.2 transaction still comes very healthy for the business. Second is the supplier relationship which gets maintained. There are invoice discounting, methods which also kicks in, like TREDS platform, RXIL platform. So they also, provide the online journey of invoice discounting, where the supplier has raised an invoice to Flipkart, which is worth of 2 crore rupees, and Flipkart gets the ability to bid this invoice against set of bidders, which is normally the banks and large NBFCs, and who is able to provide the maximum. So based on risk and the amount associated, these lender gives them the best quote. So they give, like, suppose for this 2 crore invoice, SDFC is offering uh, loan at the rate of 10% or 8%. Bank of Baroda is offering at 7.8%. Now this becomes very viable because everybody trusts Flipkart. They are going to give the money, so they can play on the risk. They can provide the loan. So the Bank of Baroda provides the loan instantly to and pay to the supplier 2 crore rupees to the supplier, and Flipkart has to pay Bank of Baroda with the credit line of 45 days to 90 days. That is what which has been working at a larger scale in this ecosystem. So the Does that interest answer? payment, yes, Yes. answer first part. I had a new question in mind. So when you say the interest is distributed, what does that mean? Is it distributed amongst the buyer and the seller, or Yes. say for example an entity A who is a buyer and entity Yeah. B is a seller? So this 45-day, 90 days credit, 1% transaction, the B A bears, right? The buyer Right. bears, right? Right. So they are, so anybody can be a, right. So it's Yeah, very that's what I was flexible. asking. So is it Yeah. a flexibility is there, or it's the product is such that yeah. Yeah. So product is such that flexibility is there. That is called variable card interchange program, where supplier so if you look at the supplier is getting payment and on the same day, where the invoice says that invoice can be paid within 30 days or 45 days, right? That's the typical cycle. So if a supplier who is getting a payment and on the first day, that means he is getting benefit of it, right? So he can still bear some charges to get the payment upfront, right? So sometimes in some models, supplier bears suppose 0.2 or 5.5%, and the buyer bears some part of it, and the whole ecosystem survives. Now, variable card interchange, what it offers is, suppose this card has been issued by ICICI Bank, okay, and the card is being processed. So acquiring the card processor is also kind of is part of this chain, which is not visible. So the card is being processed by ICICI only. So when both the parties are same, they can go really lower in the market, because they do not have to go to Visa for that transaction. Suppose so I'll tell you, probably, this would need more clarification. So suppose I have given credit card with a credit line of 2 crore rupees to this buyer, right? And buyer is paying to the supplier, and this is a CUG program, a closed unit group program. So, so if buyer is paying 2 crore rupees to the to the supplier, so typically in any payment the charges are availed by
the card which has been issued by whichever network. So अगर वीजा है तो वीजा को पैसा मिलेगा, जिसका कार्ड है उसको पैसा मिलना चाहिए, बिकॉज दैट इज दे आर बियरिंग द कॉस्ट, क्योंकि आईसीआईसीआई कार्ड है तो आईसीआईसीआई ही लोन प्रोवाइड कर रहा है। एक्चुअली में पैसा जब उसको मिलेगा दैट इज बीइंग फ्रॉम आईसीआईसीआई। प्रोसेसर जो है, यानी अगर एक प्रोसेसर मान लो एचडीएफसी बैंक है, कि अगर जहां पे वो कार्ड स्वैप कर रहा है, जैसे मैं शॉपर स्टॉप पे जाके कार्ड स्वैप करता हूँ, तो हो सकता है वो एक्सिस बैंक का पॉस सिस्टम है, या शॉपर स्टॉप एक्सिस बैंक को यूज कर रहा है और मैं आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड लेके गया हूँ, तो एक्सिस बैंक को भी कुछ पैसा मिलेगा, आईसीआईसीआई को भी पैसा मिलेगा, और वीजा मास्टर के थ्रू होके जाएगा, क्योंकि एक्सिस और आईसीआईसीआई वीजा मास्टर के थ्रू ही बात कर रहे हैं और कोई तरीका नहीं है। बट when we bring a setup जहाँ पे कि आईसीआईसीआई कार्ड है और आईसीआईसीआई ही प्रोसेसर है, तो वीजा मास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बैंक के पास ही है, बैंक को ही प्रोसेस करना है। तो वो जो लिवरेज बच जाता है, जो वीजा के पास जो पैसा जा रहा था, that may lead to the lesser cost to lesser transaction cost, lesser transaction processing cost in this transaction. तो आप समझे ना कि ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन में कम होता है, जब सीयूजी प्रोग्राम चल रहा होता है तो कम कर सकते हैं। तो वहां पे देयर आर मैकेनिज्म व्हिच these कार्ड नेटवर्क कंपनीज, इवन रुपे हैज कम आउट विद सच प्रोग्राम्स, तो कार्ड नेटवर्क्स के पास काफी लेवरेज मिल जाता है, और दिस बिकम्स वेरी इजी वे टू एक्सटेंड लोन्स टू द बिजनेसेस, राइट? या टेल मी। No, I got it. Please go. हाँ, तो अभी इतने एडवांसमेंट हो गए that per transaction virtual card issue होते हैं। So if you look at all these airline companies, suppose Make My Trip has booked worth of 2 crore rupees flight bookings on Indigo। तो अब अगर Indigo को पेमेंट करना है तो they are extensive products which has been developed, जिससे virtual card ये प्रोग्राम होता है। वहां पे कैसे होता है कि एक ट्रांजेक्शन के लिए एक ही कार्ड, वर्चुअल कार्ड क्रिएट हुआ है, दैट इज डिजिटल ओनली, कि जब भी उस पे पेमेंट होगा, जब भी उससे पेमेंट होगा, इट इज फॉर द इंडिगो पेमेंट ओनली, एंड इट्स देयर पेमेंट्स लाइक जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का जो सेटलमेंट होता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में सपोज आई गॉट एडमिटेड इन अपोलो हॉस्पिटल। अभी अपोलो हॉस्पिटल मैंने क्लेम किया कैशलेस, जो भी अभी क्लेम किया, मान लो मेरे पूरे मेडिकल ये उसका खर्चा है 3 लाख रुपया, तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है और वो जो 3 लाख रुपया इसको देना है, हॉस्पिटल को देना है, दैट दे यूज सच प्रोग्राम, जिससे कि सिर्फ रिकॉन्सिलिएशन इजी नहीं हो जाता है, फास्टर होता है, which makes which give them a competitive advantage। क्योंकि कोई इंश्योरेंस कंपनी अपने टिपिकल कन्वेंशनल ये वर्किंग से, ऑपरेशन से, they cannot fascinate the larger crowd, they have to come out with the competitive edge। कहीं पे तो बेनिफिट लिखा होता है, these are methods where they are coming out with। तो आप देखो Ditto Finance, these new age fintech companies, insurtech companies are rising because they have such a capability where they any hospital ऑन बोर्ड देम, कि उनके साथ लिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी उनको फास्टर पेमेंट कर सकता है, एंड एवरीबडी गेट्स बेनिफिट, राइट? सो ऑल ऑफ दिस ऑपरेशन, सो टिपिकल पुराने जैसे कंपनी, प्रॉब्ली स्टार हेल्थ, प्रॉब्ली दे हैव इम्प्रूवाइज्ड, बट उनके में क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बिकॉज द मोस्ट ऑफ थिंग्स आर मैनुअल। बट व्हेन यू डू दिस ऑटोमेशन, सो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है ऑटोमेशन बिल्ड करने में, but when you reach a scale, it gives you 50% efficiency more than what they are getting, so you end up making money, you end up going profitable in that case। Hope I kind of covered some of your part। Yes. So Thank first and question which you have asked, what about the payables? So see, payables have a lot of big problems, right? So पेबल्स का बड़ा प्रॉब्लम ये है, ट्रांसपेरेंसी। पेबल्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है द वर्क फ्लोज, व्हिच आल्सो इंक्लूड्स अप्रूवल वर्क फ्लोज। सपोज and we have seen this, right? There are many companies who shut down because they had this type of
in deficiencies in their corporate governance, जहाँ पे भारत पे allegation लगा कि they had made payments outside of the country, ये company which was not aligned, right? If you look at their, they are big unicorn companies who are just Go Mechanic. All of these companies had this kind of, what has really happened, misquotation of number, the money has gone out, and which where the validation and the controls failed. So that is where. And second thing is that it should be complied with GST. It should comply with the regulation. You do not end up in doing certain transaction. I'll tell you, some companies who are operating in gray area, or they are running a shady business, क्या होता है कि उनको अपना बैंक अकाउंट नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, किसी शेडी पेमेंट प्लेयर के पास, जिनके पास अभी भी, वो जाते हैं वहां पे एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं. अब सपोज एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट कर लिया है उन्होंने किसी किसी शेडी पेमेंट कंपनी के साथ. अब वो वर्चुअल अकाउंट पे आपके पास आएंगे और बोलेंगे मेरा एक कंपनी है एंड आई एम सप्लाइंग यू समथिंग एंड आई विल रिसीव सम पेमेंट्स, राइट? और probably suppose there is an internal fraud which is happening in the company. आप अभी तो छोटे साइज में हो, but when it grows to a very large organization, तब ये बहुत chances होते हैं कि that shell company comes on board with you. Now when you make payment to him or in whatever concurrence, आप उसको जब पेमेंट करोगे, you'll not check कि वो वर्चुअल अकाउंट में कर रहे हैं क्या. We have all these mechanism built, which is fraud risk management system. वो ये चेक करता है कि ये जिसके अकाउंट में जा रहा है, क्या वो वैलिड अकाउंट है, क्या वो related party payment है क्या, right? So when we onboard a business, we kind of do the fraud checks and the director reputation check with their MC portal. और जब पेमेंट जिसको जाता है, जिस बिजनेस को, उस बिजनेस का भी हम बैकग्राउंड को, मतलब हमारे जो एल्गोरिथम्स हैं, that keeps on checking कि कोई डायरेक्टर का किसी हायरार्की में इस डायरेक्टर सेट से कोई ओवरलैप है क्या, राइट? और अगर है तो कितने परसेंट का है, राइट? तब वो ट्रांजेक्शन करते हैं. तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू डू नॉट एंटिसिपेट राइट नाउ, बट वी कम अक्रॉस लॉट ऑफ सच सिनेरियोज जहां पे ये सब ऑलरेडी हमने बिल्ड किया है कुछ लेवल तक, और जैसे जैसे सिनेरियोज आते हैं वो बिल्ड हो जाता है, तो द सिस्टम बिकम्स वेरी रोबस्ट and and which helps you in meeting up with the compliance and the regulatory norms, right? तो payables में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ऑर्केस्ट्रेशन का, कि you have a valid onboarding vendor onboarding mechanism. हम since we are running a digital company, तो हमारे vendors का जब onboarding होता है, तो we ensure कि since कि we integrate our APIs and all. तो मैं अगर suppose onboard कर रहा हूँ मीशो को, तो मैं उनको comply करवाता हूँ with checklist, जिसमें एक checklist में ये होता है कि तुम्हारा VAPT हुआ है वेबसाइट का, मतलब तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है उसका vulnerable assessment and penetration testing report चाहिए होता है मेरे को चाहिए होता है कि उसका जो भी सर्टिफिकेशन है रेगुलर सिक्योरिटी कंप्लायंस का, वो मुझे चाहिए होता है. And that's my standard vendor onboarding process. Similarly, we empower our merchant set with such a capability जहाँ पे वो भी जब अपने vendor को onboard कर रहे हैं, right to audit से लेके उनके security checklist का भी मैं उनको empower करता हूँ कि they can get it from their set of vendors. So vendor onboarding, even we there is a case with Wow Momo, although it's been in discussion only. तो जैसे वाव मोमो है, वो 300 स्टोर्स है उसके और खुद के हैं. तो देन all the stores are having their own current account in their own state, all of these. Now where I add leverage to them, कि what I'm saying कि मेरे पास connected banking setup है और escrow account setup है, where I can bring them to one bank. Suppose मैं Yes Bank के connected bank के 300 स्टोर्स को ले आता हूँ, तो हर एक स्टोर पे जो भी डे टू डे धंधा हो रहा है, तो बिजनेस व्हिच इज दे आर डूइंग ऑन डे टू डे, probably that may be around 15 lakh. अब 300
300 स्टोर अगर 15 लाख का धंधा कर रहे हैं तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा फ्लोट मेंटेन कर रहे हैं अकाउंट में, लेकिन वो अलग अलग बैंक में कर रहे हैं, तो देयर इज नो बेनिफिट दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आपको सीमलेस जर्नी पे कनेक्टेड बैंकिंग पे सारे अकाउंट यस बैंक पे खोल के देता हूँ, देख इट्स स्टिल अ करंट अकाउंट, कुछ चेंज नहीं होगा। बट व्हेन एवरीथिंग इज कनेक्टेड बैंकिंग ऑन वन बैंक, तो वो जो 50 करोड़ का फ्लोट जो मेंटेन कर रहे हैं ना, दे कैन ऑल्सो गेट द किकबैक फ्रॉम बैंक, क्योंकि बैंक तो 8% से 10% कमीशन कमा रही है उस फ्लोट पे, राइट? So, we give wow Momo a leverage that, they can speak to the bank. We empower such discussion with the bank, saying कि हम 50 करोड़ मेरा business maintain कर रहा है, can you give them a kickback of 1 to 2% so that they cover their operational working capital needs, right? So this is talking about, I'm talking about the second layer जो supply chain finance module या ये सब जो provide करते हैं, right? Any questions or I'm deviating from the No, perfectly. You have two follow-up questions, Amit. So I'm just asking in a industry parlance, like industry means factory setups, right? Because we are into. See, what we understood in this segment, this industry is. Just want to feedback. This CUG VIP, is it a very common norms in industries? When I say industries, the factory setups in India, or Yes. they're still to adapt? No. This is very common, since Okay. probably the large amount of exposure is with the enterprises where these are very slow, and probably this is not exactly they require, but these are a big name in this industry. So they are No, more I'm than asking so from a usage perspective. I'm saying something like what yeah. is this about this 5 point pay by cards, pay by BBPS, pay by bank financing, which is the largest chunk which they are using existing. मतलब आज की date में, which Yeah. are they using this? मतलब this means I have a second question to this, because I'll ask the second question because that will make the first question valid. कि the validation which we are doing for a vendor side, if it is the right, the shell companies, and these are bigger problems, right? Right. So there's a big need to, from an enterprise standpoint, to have this, right? What I foresee, and for us also, which we are one vendor platform, we will have multiple vendors in short times, and cross checking manually is a mammoth task. Having a solution like this is definitely a leap towards our vendor engagement for sure. So Right. So, yeah. go ahead, go So ahead. to answer your first question, which is more popular. So when I speak about a large corporate, right? So it depends, right? So for a large corporate, pay by bank is the most common method, like a Nifty RTGS, where they are riding on ECMS system, right? So you might have seen SAP is being operated. SAP ke piche, there is a ECMS system of either Bank of Baroda or HDFC Bank or Yes Bank. So they operate typically, and they have kind of this uh, legacy system. We have been there for a while, like for quite a decade now, right? So this is pay by bank is the most one number. Second is financing, where this financing legs comes in. Third is the card with enterprises, right? Now the enterprises are evaluating cards, so cards is picking up, where Titan is evaluating card setup for their dealership, so that the dealers can prosper, and kind of they these corporates help their dealership to thrive. So they are trying to get into that. When I speak about MSME SME group, then the first choice is of course bank, but in the difference between the gap between the bank and card is very less, right? And the financing becomes the core requirement for them. So financing is also kind of a big setup, third number, but the requirement is so huge, it's not picking up because these MSME SMEs, the credit footprints are very less, so banks hesitate to underwrite them, and they are not getting credits. जहाँ पे क्रेडिट नहीं मिल पाता है, वहाँ पे कॉर्पोरेट कार्ड वाला सेटअप अगर थोड़ा जाता भी है, तो कोलेटरल फ्री वगैरह अगर उनके लिए जाता है, तो वो भी थोड़ा हेजिटेट होता है. तो सपोज इफ डिमांड इज फॉर 100%,
तो बैंक कवर करती है सिर्फ 10 to 15% को ही, राइट, विद देयर B2B लेंडिंग. कॉर्पोरेट कार्ड और ये सब सेटअप है ना, इट गोज फर्दर 10% ये विद दैट, राइट, 10% 20% जहाँ पे वो एक्सपेंसेस हैंडल कर पाते हैं अपना, वो पे कर पाते हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को, लाइक AWS को पे कर पा रहे हैं, ऑल ऑफ दिस, राइट. सो कार्ड्स को अनदर 10 to 15% कवर करते हैं. तो फिर आता है आपका सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, तो वो तो खैर बड़े को ही मिलता है. तो यही है, गैप तो रह ही जाता है, 70% का गैप तो फिर भी रह गया, राइट, जो कि क्रेडिट हंग्री है बट नहीं कर पा रहे. इसलिए इस स्पेस में, लाइक यू नो, B2B फाइनेंसिंग और लेंडिंग स्पेस में there are many innovation which is happening, how to underwrite, what alternate data. So उसी में एक concept है revenue based financing का, जिसमें आप समझ लो कि अगर चाय वाला ये है और उसको 50,000 का क्रेडिट लाइन दिया है किसने, पेटीएम ने या भारत पे ने, तो वो क्या कर रहे हैं कि उसके पास तो इतना भी क्रेडिट वर्दिनेस नहीं है कि उसके पास आधार कार्ड भी है, तो एटलीस्ट किसी तरीके से उसको अंडरराइट करके कि आधार कार्ड चलो उसका ले लिया किस तरीके से, फिर भी अंडरराइट करके उसको 50,000 का क्रेडिट लाइन दिया है, तो वो कैसे ले रहे हैं, कैसे वापस करेंगे. तो हाउ दे डू इट कि उनके डे टू डे जो भी ये अर्निंग हो रही है वो डेली, अगर उसने मान लीजिए ये 2000 का आज सेल किया है चाय बेच के, तो 2000 में से 300 रुपए रख लेंगे और 1700 रुपए उसको वसूल करेंगे. तो आज अगर 2000 का पेमेंट हुआ उसके पेटीएम में, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग. तो जैसे जैसे वो बंदा अर्न कर रहा है, जैसे कल वो अगर 5,000 का धंधा करने लग गया तो उसको 2 लाख तक का क्रेडिट दे देगी भारत पे या पेटीएम. तो ये धीरे धीरे अल्टीमेटली इट इज यू नो इट इज इनएविटेबल कि वो हमको मतलब एकदम ग्राउंड लेवल तक जाना है, जहाँ पे कि बैंक अंडरराइट नहीं करता है. तो वैसे वैसे फिनटेक इवॉल्व हो रही है, नए मेथड्स इनोवेशन कर रही है टू रीच आउट टू द लीव नोड्स टू प्रोवाइड क्रेडिट लाइन. जैसे डेयरी वाला है, एक डेयरी वाला है, उसको कोई अंडरराइट नहीं कर रहा, बैंक नहीं दे रही लोन, लेकिन देयर आर मेनी फिनटेक्स व्हिच हैज कम आउट जो किसी बेसिस पे उसको लोन दे रही है, एंड लोन दे रही है, उसका रीपेमेंट ले रही है, एंड दे आर स्ट्रीमलाइनिंग एंड दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट. Right. So see, there are two aspects. When you say that your problem statement is payables, it is actually a collection problem for the supplier who is supplying you the right. क्योंकि उसको जो रॉ मटेरियल खरीदना है उसके लिए उसके पास वर्किंग कैपिटल का डिमांड है, राइट. आपके पास क्या है, यू आर ये सप्लायर टू योर यू नो क्लाइंट्स. तो आपने अपने सप्लायर से बाय किया, बट you know, so you have these two parties जहाँ पे your platform helps them to collaborate. बट अगर उसके पास वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम तो उसके पास है कि वो अगर उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं रहा तो मटेरियल ही नहीं बना पाएगा, तो वो चेन ब्रेक हो जाएगा, राइट. तो अल्टीमेटली इट्स द कलेक्शन प्रॉब्लम, मतलब एज एन ये कैपिटल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंट, राइट. तो अभी the point I'll just close that the last query. See, workflow has to play a larger role because the workflows which gets embedded in your existing ERP system, जैसे I'll tell you, suppose DLF has this particular issue. DLF हजारों सप्लायर से डील करता है, which is providing them the cement, कोई rods provide कर रहा है, different type of rods provide कर रहा है, and it's their categories, right. अब if there 46 people of accounting team sitting in 4 different cities is able to manage DLF का whole procurement cycle, अगर वो अलग अलग सिटी में हो रहा है तो इतना तो efficient नहीं है. You are running your business, right. अगर आप अभी अपना procurement अलग अलग सिटीज में, अगर 3 सिटीज में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो क्या ये एफिशिएंट होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप किसी से बार्गेन बेटर कर पाओगे व्हेन यू आर एक्चुअली प्रोक्योरिंग इन लार्ज क्वांटिटी, राइट. अगर मैं 3 सिटी में अपने ऑर्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, अपने रिक्वायरमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो प्रॉब्लली मेरा 50 टन और ये स्टील का जो रिक्वायरमेंट है या रॉड का 50 टन का रिक्वायरमेंट है, अगर वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा साउथ में 20 टन और 10 टन और 20 टन, so I'll not get the pricing advantage, right, Sushant? Got it.
सेम डीएलएफ के लिए भी यही केस है कि when they deal with Lafarge or they deal with lot of local players and the national player, तो क्या होता है एसएपी पे बहुत एक्सटेंसिव ये है. नाउ व्हेन दे काइंड ऑफ पे टू देम, तो इनके लिए कैसा होता है कि इनफ्लो आना चाहिए कि कस्टमर का जो ये इनएच के थ्रू उनका ईमेल आ रहा है वो सब, और इनका जो बाहर जा रहा है पैसा जो पेबल्स है, पेबल्स हैज टू फॉलो सम एल्गोरिदम्स कि किसको पहले पेमेंट करना है और किस प्रोजेक्ट के लिए किसको पहले पेमेंट करना है, क्योंकि वो वैलिडेशन रूल अगर अगर प्रोडक्ट में नहीं डाला, अगर मैंने पर्सन डिपेंडेंट रखा है, तो गलती होने की बहुत चांसेस होती है. और इस इंडस्ट्री में पेबल्स में के केस में ये दिस इज समथिंग व्हिच वी काइंड ऑफ टॉक बिटवीन आवरसेल्व्स कि पैसा गया तो उम्मीद नहीं है आने की, राइट. अगर गलती से डबल क्रेडिट हो गया तो भूल जाओ वो पैसा वापस आए, राइट. सिमिलरली अगर अगर जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट है, और उसका जैसे जो कंप्लायंस होती है रेरा कंप्लायंस, कि आप उसमें 10% पैसा ले सकते हो जब वो फंडामेंटल आपने बिल्ड किया है, आप कस्टमर से पैसा नहीं ले सकते हो पूरा, राइट. सिमिलरली वैसे ही होता है कि आप अपने वेंडर को भी वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में डालते हो कि मैं तुमसे ये हूं तो मैं इतना ही पैसा दे पाऊंगा इस प्रोजेक्ट पे, राइट. और उसके भी स्टेजेस डिफाइन होते हैं, राइट. तो वो स्टेजेस अगर हमने वर्कफ्लो में बिल्ड नहीं किया है, तो समटाइम्स व्हाट हैज हैपेंड कि आप किसी लोकल प्लेयर को ना यू एंड अप पेइंग द फुल अमाउंट. अब वो लोकल वेंडर जो है ना, अब जैसे डीएलएफ ही है, बट वो लोकल वेंडर इतना स्ट्रांग है वो एरिया में कि आपने उसको सपोज लेबर का फुल पेमेंट दे दिया, अब लेबर डालता ही नहीं है आपके पास, अब देता ही नहीं है. नाउ इट गोज इन अनदर साइकिल एंड इट्स एंड अप इन लॉसेस, राइट. तो ऑल्दो SAP is able to manage to some extent, लेकिन क्या होता है ना, ये लार्ज एंटरप्राइजेस है, उनके पास अगर एक भी ऐसी रिक्वायरमेंट गई कि ऐसा वर्कफ्लो में चेंज करना है, तो देन दे कि ऐसा चेंज करना है कि अगर कोई पेमेंट जा रहा है जो 2 करोड़ से ऊपर है, तो इट शुड गो वाया ये CFO, और ये होना चाहिए, या ये अगर पास हिस्ट्री को देखते हुए कि स्टैटिस्टिकली का देखेगा कि पास हिस्ट्री में ऐसे ही ग्रोथ के साथ इसको पेमेंट गया है, तो ये कह लो कि ठीक है, नॉमिनल ट्रेंड में आ रहा है, तो द पेमेंट गो स्मूथ विदाउट एनी इंटरवेंशन. लेकिन जहां पे फ्लो चाहिए, तो ये सब कैपेबिलिटी ना SAP, Salesforce, ये सब जायंट कंपनीज are not able to provide sometimes customization. So where these workflows become very critical. Got it. Right. Got it. Yeah. Shashank, go ahead. Yeah, so basically, my question is about this slide only. So you have mentioned about the BBPS, that is Bharat Bill Payment System, and UPI B2B. So Yes. first of all, what is BBPS as a whole entity, and what's the difference between the BBPS and UPI B2B? Yeah, I'll tell that. So you have Bhim app or the Google Pay or anything, right? Yeah. So if you look at, I'll just first clarify what is the difference between UPI and BBPS. Okay, UPI is what you are using day in day out, that you are transacting to any person or a business via your PSP app, which is Google Pay, PhonePe. Now BBPS. So if you look at BBPS, which is Bharat Bill Payment Services System, it is providing a rail. तो आप गूगल पे में जब जाते हो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने, तो व्हाट यू सी टिपिकली, एंड इफ आई स्पीक द नोमेनक्लेचर करेक्टली, तो व्हेन यू गो एंड क्लिक ऑन की पे बिल्स, और वहां पे आपको दिखता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक आइकन, आप वहां पे जाते हो. नाउ द लिस्ट यू सी देयर इज द बिलर्स हु आर ऑनबोर्डेड ऑन BPS सिस्टम. ठीक है, एंड दिस इज B2C BPS system. What you see on Google Pay today is B2C BPS system. ठीक है, वहां पे क्या है, ये बिलर्स है कि typically all utility companies are there, like electricity, gas, water, all of these are there. तो वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी देखते हो, बिलर देखते हो, आप वहां पे सर्च करते हो, सपोज सर्च किया आपने बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सपोज, तो आपने जैसे सर्च किया, यू विल सी दैट बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज देयर. नाउ यू क्लिक ऑन दैट, देन यू गो, that will ask for a customer ID or some identification. Now you feed your this. So this is typically hitting to BBPS system, Bharat Bill Pay system,
and it has inbuilt integration done with Bihar Electricity Board ERP system कि अगर ये कस्टमर आईडी कोई भी कस्टमर आईडी का ये फीड लेके आता है तो यू हैव टू रिवर्ट बैक विद द अमाउंट ड्यू फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। तो वो क्या करता है उस पर्टिकुलर एंटिटी के सिस्टम से फेच करके आपका बिल लेके आता है। नाउ इट प्रोवाइड्स यू पे बटन इन द कि आपका आ गया कि हाँ 2000 रुपीज का अमाउंट है ड्यू फॉर दिस करंट मंथ। नाउ देयर इज अ पे ऑप्शन यू गेट व्हेन यू पे टू दिस ऑप्शन। तो आपको टिपिकली पेमेंट गेटवे आता है और वो उस पेमेंट को जब आप प्रोसेस करते हो ना तो जो बीबीपी ऑपरेटिंग यूनिट है व्हाट ही डज इज कि इट प्रोसेस पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ भारत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और वो बिहार इलेक्ट्रिसिटी को पेमेंट कर देता है। और दिस रेल्स हैव बीन डेमोक्रेटाइज्ड टू दैट लेवल कि एक तो कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको सेम ही बिलर्स और सब कुछ मिलेगा। अगर आपने यहाँ पेमेंट किया है या फोन पे किया है ये रेल्स सेम है सबके लिए। तो किसी और को अब जैसे सपोज पहले क्या होता था टिपिकली, पहले होता था कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है, अब कोई एक पेमेंट गेटवे कंपनी जाएगी बोलेगी कि सर मैं आपका डिजिटल जर्नी स्टार्ट कर देता हूँ। तो वो बोलेगा पहले तो मेरे को वेबसाइट बनानी पड़ेगी अपनी अच्छी वेबसाइट बनाएंगे तब वहां पे लोग आके और फिर पेमेंट करना चाहेंगे तो वहां पे पेमेंट गेटवे जर्नी देते हैं। नाउ दैट वाज रिस्ट्रिक्टिंग टू फ्यू ऑफ द पेमेंट गेटवे प्लेयर जो उनके वेबसाइट पे जाके इंटीग्रेट करें, और तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नाउ ये इवेंचुअली दे एंड अप इन इंटीग्रेटिंग विद मल्टीपल पेमेंट गेटवे प्लेयर जो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा था, जिसमें कि उनके पास प्राइसिंग एडवांटेज भी नहीं मिल पाता था। अल्टीमेटली जो कस्टमर पेमेंट कर रहा है उसके लिए ट्रांजेक्शन चार्जेस हैवी पड़ जाते थे। अभी कैसा है बीपीएसएल में एक ही इंटीग्रेशन करना हुआ वो भी बीपीएस सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, और वो किसी भी गेटवे से इंटीग्रेशन नहीं करना उसको, राइट। हर जगह आपको अवेलेबल है बिकॉज ऑफ दैट सिंगल इंटीग्रेशन। दिस इज बीपीएस B2C। नाउ I'll come back to B2B। so B2B अब सिमिलर टू दिस रेल्स कि B2B में अब सपोज एक सप्लायर है विच इज बिग सप्लायर, जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चिप्स सप्लाई करता है, वो इतना बड़ा है। अब वो सपोज ये आप देखो इस वाले में भी, और ये इवेंचुअली द होल इंटेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और ये ऑल एनपीसीआई इज टू डेमोक्रेटाइज such accessibility कि वो लार्जर स्केल में हो, लीस्ट कॉस्ट में हो, राइट। और उस इकोसिस्टम पे इसका कंट्रोल हो, किसी दूसरे एंटिटी का कंट्रोल हो, रेदर देन वो कंट्रोल किसी टेक जायंट का हो। अब अगर सपोज ये कैपेबिलिटी और किस में है, सपोज ये कैपेबिलिटी है गूगल में या अमेजन में। सपोज अगर गूगल, अमेजन या कोई यूएस की कोई बिग टेक फर्म सपोज इंडियन रेल्स का ये सपोज वो बीपीएस बनाती है, कैन यू इमेजिन कि किस लेवल का डिपेंडेंसी आप दूसरे किसी को दे रहे। कल को जैसे आज गूगल प्ले स्टोर में दे यू नो नोबडी हैज एनी राइट्स कि कल को अगर वो चार्जेस लेके आ जा रही है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट राइट। सो दे गेट द मोनोपोली। तो आप वो मोनोपोली तभी हटा सकते हो जब यू हैव योर ओन इकोसिस्टम राइडिंग ऑन योर ओन रेल्स। तो जैसे बीपीएस रेल्स है, अभी वो बीपीएस रेल में कस्टमर सेफ प्रोटेक्टेड है, ये रेल का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एनपीसीआई के पास है। तो एनपीसीआई इंश्योर्स कि किसी भी कस्टमर का ग्रीवांस है, डिस्प्यूट है, वो रिजॉल्व हो। सो दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये सब कुछ हो, राइट। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि किसी कंपनी का इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी मतलब करोड़ों के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, करोड़ ट्रांजेक्शन हो रही है, 300 रुपए का पेमेंट है कस्टमर का, एट स्केल दे काइंड ऑफ स्टार्ट इग्नोरिंग कि 300 रुपए का है, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, विद स्केल वी विल नॉट केटर टू कस्टमर। लेकिन आप अगर ये देखोगे तो यू विल हार्डली फाइंड कि ऑन दिस रेल्स, यूपीआई रेल्स और बीपीएस रेल्स, कोई कस्टमर के डिस्प्यूट को अनकेटर्ड रखा जाता है। दे केटर टू इट, दे मेक श्योर कि इंडियन इकोसिस्टम में के ऊपर इतना ट्रस्ट रहे कस्टमर का और इतना ये फेथ रहे कि इट should flourish. It is that's why this is going to going to next level and reaching out to other countries, right? So if I speak about BBPS B2B, now if you look at B2C वाला problem solve हुआ with this rail. Now B2B वाले में क्या है, बहुत सारे सप्लायर है, वेंडर है।
अब वो बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सारे कुछ मिड साइज के हैं, और बहुत सारे बहुत छोटे छोटे हैं. What they are ultimately targeting is कि can we streamline those suppliers and vendors को पहले, क्योंकि वो तो फिर भी जो भी है वो तो फिर भी लिमिटेड काउंट में है ना. अगर कस्टमर को हैंडल कर सकता है तो कैन यू इमेजिन कि सप्लायर का काउंट कितना होगा? लैक्स, प्रॉब्ली करोड़, इतने सप्लायर होंगे, लैक्स करोड़ सप्लायर और वेंडर. अब इसमें के बीच में जितने ट्रांजेक्शन में, विच इज एक्चुअली द 2/3 ऑफ होल ट्रांजेक्शन विच इज हैपनिंग. और अगर वॉल्यूम में देखा जाए तो वॉल्यूम में तो 3/4 है पूरे वॉल्यूम का. अगर 1.3 मिलियन ट्रिलियन रुपीस का ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो 1 ट्रिलियन तो B2B में ही हो रहा है, जो आपस में हो रहा है, वेंडर और सप्लायर में, सप्लायर और वेंडर में, राइट? राइट सुशांत, इफ आई एम Yes, yes. if I am able to explain properly. Right, तो right. तो B2B में बाय वॉल्यूम बहुत पार्ट है जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वेयर RBI हैज दिस पर्टिकुलर आई ऑन दिस कि अगर मेरे इकोनॉमी का लार्ज पोर्शन, 75% पोर्शन अगर B2B ट्रांजेक्शन है, तो हाउ आई एम रेगुलेटिंग इट, हाउ आई एम एनेबलिंग दिस प्लेटफॉर्म और एनेबलिंग दिस इकोसिस्टम कि बॉस ये ट्रांजेक्शन मेरे रेगुलेशन में रहे और कहीं पे ऐसा फट नहीं जाए. तो दूसरा ये वो केस, दैट्स व्हाई B2B BPS concept has arisen. और उसमें what they typically wanted to solve here is कि कस्टमर डिस्प्यूट हो, उनके पास विजिबिलिटी आए कि क्या हो रहा है, कहाँ से किस सप्लायर के पास कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक लेवल ऑफ विजिबिलिटी आए. इंटरऑपरेबिलिटी आए कि जैसे कोई सप्लायर जोहो पे बैठा है और वो बहुत सारे बायर है उसके पास. अब वो ये मैंडेट नहीं करेगा कि मैं अगर जोहो से आपको इनवॉइस भेज रहा हूँ और उसके सिस्टम में रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो टैली सिस्टम यूज कर रहा है. नाउ ये जो ऑटोमेशन था, ऑटोमेशन गोज फॉर अ टॉस, क्योंकि वो इंटरऑपरेबल ही नहीं है. नाउ टू ब्रिंग इंटरऑपरेबिलिटी, व्हाट इफ कि ये जो सप्लायर है जब वो इनवॉइस रेज कर रहा है जो से, उसके टैली सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट कर जाए and tele-compatible. So that is the interoperability they wanted to create with this B2B ecosystem, which is also providing them कि कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि इस वैल्यू भी ऐड करना चाहिए. तो BPS इकोसिस्टम में इनवॉइस डिस्काउंटिंग TREDS प्लेटफॉर्म आ रहा है, एक्सेल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड आ रहा है. तो anybody who is raising invoice, the buyer also gets invoice discounting option कि बायर वो चूज कर सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का वो इनवॉइस डिस्काउंटिंग करवाना है, तो वो चूज करेगा. तो बैंक ऑफ बड़ौदा विल पे टू द सप्लायर एंड बायर विल एंड अप पेइंग EMIs टू द बैंक ऑफ बड़ौदा. ये सब फैसिलिटी BPS में ऑलरेडी बिल्ड आ रही है. अब सिंस दिस इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो कॉस्ट बहुत लीस्ट होगा. यू कैन से जो बेनिफिट अभी BPS में मिल रहा है हर जगह अवेलेबल है, तो वो भी probably in some years you will find that कि B2B BPS ये ऑलरेडी भीम में B2B करके है. B2B if you look at भीम में, if you go view billers, तो वहां पे आपको B2B दिखेगा. you will see कि लिस्ट ऑफ सप्लायर्स और लिस्ट ऑफ बिलर्स दिखेंगे आपको. आप अपना इनवॉइस डालोगे तो you'll see and you'll get option to pay there. तो all of this capability will come with BPS system. And So Amit, what is, yeah. okay. So just थोड़ा सा just simplifying it. So B2B BPS Sushant would be like existing B2B का functionality plus the Threads platform के functionalities, right? Additional. तो incrementally invoice discounting plus existing B2B की functionality, is that a right statement if you say additional ये existing from a functionality perspectives, right? So यही डेल्टा फीचर है जो हमें जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग मिला, जो आज की डेट में B2B पेमेंट्स UPI में नहीं मिलता है, राइट? राइट, वो नहीं मिलता अभी. और नॉट जस्ट दैट, No, no, I think ये इंक्रीमेंटल है, राइट, बट इट्स नॉट देयर. और क्या क्या इंक्रीमेंटल होगा कन्वेंशनल B2B UPI के थ्रू? So I'll tell you where I have listed down somewhere. Yeah. So PO मैनेजमेंट, अब जैसे आपने कोई PO मैनेज किया है, ये PO क्रिएट किया है, that can be published from your system to their system. तो क्या होना, PO इनवॉइसेस सब इंटरऑपरेबल हो जाएंगी. ठीक है. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी एकदम इंटरऑपरेबल हो जाएगा कि आपका कोई किसी सप्लायर ने किसी पेमेंट में डिस्प्यूट रेज किया है,
तो इट विल फॉलो अ प्रोसेस जो कि उसने सेट किया है, तो यूनिफाइड एंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा फॉर So बोथ द Amit, one question: what does PO interoperable means? I understand interoperable, but PO we are honoring to a party, right? यस But यस। can you give example of PO interoperable? तो अभी कैसा है कि वो सिस्टम से बाहर हो जाता है, तो इफ कैसा होगा कि जैसे बीपीएस सिस्टम है, ठीक है, बीएस सिस्टम ऑलरेडी एक सप्लायर है, सपोज ब्रिटानिया एक सप्लायर है, हाँ, और ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है इसके जो उसके बायर हैं, ठीक है। अब ये दोनों इस सिस्टम पे हैं, तो इस ब्रिटानिया का ऑलरेडी सिस्टम जो बीपीएस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, विच मे बी देयर एसएपी सिस्टम, ठीक है। Okay. और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका ऑलरेडी वो सिस्टम जो है, उसका जो जो बुक्स है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बीपीएस से जुड़ा हुआ है। तो ब्रिटानिया जब भी कौन पीओ रेज करेगा, ब्रिटानिया ही करेगा। तो ब्रिटानिया जब पीओ रेज करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसके टैली सिस्टम में रिफ्लेक्ट करेगा। इट विल नॉट बी कि वो मेल पे जाएगा, मेल पे वो फाइनेंस का कोई बंदा जाके वो पीओ को अपलोड करेगा, वो सिस्टम में डालेगा। इट विल नहीं, नॉट यहाँ बी। पे my question is नहीं, so the two things. Distributor वाला use case is we sell biscuit. My example, any biscuit company sell biscuit to a distributor, right? हाँ, Where we get payment, right? Other thing is industrial procurement में we buy things when we raise PO. So I'm asking the second thing हाँ, कि जहाँ पे suppose I want to buy a 3 HP motor, right, from a supplier, right, and I'll honor a PO to a supplier in a it's a payable thing, right, right. राइट। इस केस में how does PO interoperable means मैं वो PO तो उसी सप्लाई को दूंगा, right? कैसे Just trying देते to, हो? नहीं नहीं, इसको right, so we कैसे raise a देते हो? generally conventionally any factory raise a purchase order in SAP, right? Then हाँ, that purchase order goes to the supplier and against that they fulfill. This is the तो कैसे conventional जाता process. है? नहीं, सप्लायर के Either पास fulfill कैसे? through email, sometimes there is SAP में functionality रहता है कि वो email चला जाए उसको, right, हाँ, registered हाँ, email ID, तो both sometimes it's a functionality of SAP to email, or a separately person download the PO and email it. That's the राइट। existing functionality. हाँ, एग्जिस्टिंग यही है। तो हाँ, पीओ जब ईमेल में गया और ईमेल के बाद यू हैव टू फॉलो विद दैट पर्टिकुलर गाय, फिर वो अपने सिस्टम में उसको फीड करता है, तब जाके ये होता है, राइट। right, दिस वीपीएस सिस्टम विल प्रोवाइड कि जैसे ही पीओ जनरेट हुआ ना, डायरेक्टली उसके टैली सिस्टम या जो भी सिस्टम यूज कर रहा है, डायरेक्टली वहां रिफ्लेक्ट कर जाएगा, got it, got it. राइट। इट विल ऑटोमेट द थिंग, चाहे वो So इनवॉइस। interoperable in terms of a platform, मतलब tally जो कुछ भी use करे, तो राइट, मतलब वो it's agnostic of any tool a supplier using, the PO will hit that, right? exactly, Got it. exactly. And the payment, they what they will provide typically, अभी UPI क्या है, free of cost है। So हाँ, what there would look out would be कि ये जो है वो minimal cost पे कैसे करें, and they would try to bring all those kind of government initiative, all of this something which will come, like like we have seen for the BPS में आप जब electricity bill pay करते हो, तो टिपिकली कितना एग्जैक्टली जो अमाउंट है वो पे करते हैं, या 2-4 रुपया ज्यादा करते हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर वो टिपिकल पेमेंट गेटवे से होगा ना, तो यू एंड अप पेइंग 25 रुपीज ज्यादा। got it. इफ यू कैन इमेजिन, बुक माई शो में अगर आप ये टिकट बुक कर रहे हो, तो 540 रुपए के ऊपर आपको 57 रुपीज एक्स्ट्रा देना है, या 28 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ता है, राइट, कन्वेंशनल फीस। तो आइडिया इज टू ब्रिंग दिस कॉस्ट डाउन। फर्स्ट थिंग जो Got it. B2B पेमेंट में सबसे पहला है कि कॉस्ट ऑफ पेमेंट इज हायर, इसलिए एनईएफटी आरटीजीएस करते हैं। अब एनईएफटी आरटीजीएस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये बैंकिंग रेल्स पे है, तो वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट चले जाते हैं कि आप ऑटोमेटेड रिकॉन्साइल वर्कफ्लोज, पार्शियल पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट, वो सब चले जाते हैं। कि जैसे अभी मैं कैसे प्रोवाइड करता हूँ कि जैसे सपोज फ्लिपकार्ट का होलसेल है, अभी उसमें एक कैशबैक रिवॉर्ड मैकेनिज्म भी पैरेलली चलता है, 2 लेजर चल रहे हैं। तो अगर पीओ रेज हुआ है 3 लाख रुपीस का, और उसका कैशबैक रिवॉर्ड में सपोज एक्यूमुलेट हो गया है 1 लाख रुपया, विच इज नॉट एक्चुअल करेंसी, लेकिन उसको जो पेमेंट करना है इस डिस्ट्रीब्यूटर को, वो पेमेंट करना है सपोज 3 लाख रुपया टू फ्लिपकार्ट होलसेल, लेकिन वो 3 लाख नहीं, वो क्या करेगा, कैशबैक है। तो वहां पे मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ कि ये 2 लेजर में रिकॉन्साइल करके बोलता हूँ
कि either you pay 3 lakh whole or you can you can check the cashback वाला option जिससे कि आपका payable amount will come down to 2 lakh rupees. Got it. तो जो कि टिपिकली हम किसी प्लेटफॉर्म पे एज अ कस्टमर देखते हैं कि मेरे पास अगर कोई GoAvevo के पॉइंट्स हैं तो इफ आई चेक दैट तो क्या होता है 30 रुपए का पॉइंट है मेरे पास तो 30 रुपए कॉस्ट कम हो जाता है या 400 रुपए का है तो 400 रुपए कॉस्ट कम हो गया. तो ये B2B में ये लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम ये सब नहीं है बट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट ऑल ऑफ Got दिस. it. No, that will definitely push them to get in. हाँ अभी तो B2B BNPL उठ के आया है. दैट इज समथिंग व्हिच इज आल्सो कमिंग वेयर कि BNPL जो क्रेडिट लाइन है सपोज 2 करोड़ का क्रेडिट लाइन दे दिया है किसी MSME को, ठीक है. अभी आज वो यूज कर रहा है 2 करोड़ का क्रेडिट लाइन में सपोज 25 लाख रुपया उसने आज पेमेंट किया अपने AWS को, ठीक है, कि 25 लाख रुपए का बिल आया था AWS को दिया वेयर ये जो क्रेडिट लाइन उसको एक्सटेंड हुआ उससे वो पेमेंट चला गया. अब वो जो भी लेंडर है उसको अपने EMI में सेटल डाउन कर रहा है बट एटलीस्ट उसके पास वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं है. Got it. तो टिपिकली एक बिजनेस पेज 3-4 टाइप ऑफ पेमेंट्स ओनली. एक तो वेंडर को पेमेंट करता है फॉर सर्विसेज ये फॉर रॉ मटेरियल्स वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री वाइज ही. एज अ टेक कंपनी मेरा पेमेंट होता है सेल्सफोर्स को फॉर सेल्सफोर्स लाइसेंसेस, AWS को जिसपे भी मैं पूरा पेमेंट गेटवे और इससे ऑपरेट कर रहा हूँ. इट गोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ वेंडर्स जैसे एंटीवायरस के लिए. तो ये सब पेमेंट्स का अगर मैं देखूंगा तो आई कैन स्ट्रीमलाइन आई एम ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन ऑल ऑफ दिस ऑन माय प्लेटफॉर्म. Got it. Fair तो enough. इसमें बेसिकली कैसा होता है कॉम्प्लेक्सिटी ना बहुत टाइप की है. जैसे कुछ पेमेंट है जैसे अब वो सेल्सफोर्स का कोई इंडियन एंटिटी नहीं है तो जो भी पेमेंट होना है वो डॉलर्स में होना है, राइट. अब वो सो द पेमेंट अमाउंट इज $6,000 सपोज, ठीक है. अब वो $6,000 सपोज इट्स गोइंग टू गो आउटसाइड तो उसका जो टैक्स इम्प्लीकेशन है या करेंसी कन्वर्जन का जो रेट एक्स्ट्रा लगेगा वो क्या होता है ना कि दैट गोज अनअकाउंटेड. Unaccounted, you're saying. या दैट गोज अनअकाउंटेड इन टर्म्स कि अगर कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हो, मान लो कि MSME टिपिकली या कह लो कि कोई लार्ज टाइप का मेरा कंपनी में खुद भी अगर मैं अपनी अकाउंटिंग टीम को बोलूंगा ना कि ऐसा रिपोर्ट निकाल के दो मेरे को कि वेंडर पेमेंट में कितना लॉस था जस्ट बिकॉज ऑफ करेंसी कन्वर्जन, नहीं निकाल पाएंगे. Got it. राइट बिकॉज ये इतने चंक्स में होते हैं पेमेंट ना और इतने सारे हो जाते हैं कि मेरे पास 10 टाइप के लाइसेंसेस हैं, प्रोडक्ट लाइसेंस है जैसे अडोबी का है, मेरे पास फिग्मा का है लाइसेंसेस, मेरे पास मतलब ये डेटाबेस मॉनिटरिंग का लाइसेंस है, बहुत सारे हैं, राइट. एंटीवायरस का लाइसेंस है ऑल दोस. So when I pay to them, so there are many entities who are Cloudflare है जैसे who are abroad based, उनको टिपिकली डॉलर में ही पेमेंट करना है. लेकिन ये यूनिफिकेशन नहीं है कि कितना है, राइट. Got it. Sure. तो वो मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ और वो ट्रांजेक्शनल वाइज ही हो सकता है, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रैक इट डाउन आफ्टर अ मंथ जब वो सब कुछ एक्यूमुलेट हो जाता है. Got it. Anything, any question? So audience, please ask questions. So I'm asking from my use cases, and you can ask for your use cases as well. क्योंकि and please raise your hand. I'll allow you to speak. Please. Okay. Go ahead, Amit. So I'll tell while anybody comes out with the question, I'll tell very interesting case, a few of them. So if you look at Tiger Global has invested in 3 B2B marketplace company, and all of them are competitors. So Tiger Global ने इंफ्रा मार्केट में भी डाला है, मोगलिस में भी डाला है और बिजनेस में भी डाला है, राइट. ये तीनों में डाला है, तीनों यूनिकॉर्न, राइट. तीनों यूनिकॉर्न है और तीनों मतलब एज एन इफ यू लुक एट मार्केट प्लेसेस B2B मार्केट प्लेसेस आर ग्रोइंग टू दैट पेस
कि अब वो सेक्टर फोकस्ड नहीं रहेंगे, दे विल नॉट सर्वाइव। तो इंफ्रा मार्केट का सेम स्पेस है, सेम ही इकोसिस्टम है, बट दे आर फोकसिंग ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स, तो दे आर ग्रोइंग इन दैट, तो इतना इतना वाइड स्कोप है बिजनेस अपॉर्चुनिटी का कि कि बहुत सारी यूनिकॉर्न को सर्वाइव करने का और ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी है। सेकंड इज कि सेक्टर फोकस्ड इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, नहीं रिक्वायरमेंट इतनी है कि सेक्टर फोकस्ड का ज्यादा वो है। तो इंफ्रा डॉट मार्केट, इफ यू लुक एट, they are focusing in one segment. Moglix is focusing on B2B, bringing B2B supplier in all of them together, connecting all of them. तो वो वहां पे है, that they are growing really at a very faster pace. All businesses grown really faster pace. वो typically इसी segment में कुछ part को focus कर रहा है, and they are growing. Similarly, if somebody who is really determined to solve some part of, so कुछ सेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा, everybody can see growth. Hope I'm making my point here. Yeah, So yeah, similarly, absolutely. similarly, what we are trying to do in this ecosystem, if you look at payments, is so marginal game, right? Because this has become commodity. Nobody wants to. सबको लगता है कि यार पेमेंट हो रहा है, क्यों पैसा इसमें ज्यादा दे रहे हैं? Why 1% would be applicable? यानी अगर आप जाओगे and if you are talking to auto dealer, वो पूछेगा कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले हो तो 1% ज्यादा लगेगा, बिकॉज हमारा डिडक्ट हो जाता है, राइट? एंड दैट वाज टिपिकली इन कन्वर्सेशन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, क्यों देना है? सो नाउ पेमेंट्स इज अ कमोडिटी, और 70% 70% पेमेंट्स आर हैपनिंग थ्रू यूपीआई, व्हिच इज वेयर नोबडी इज मेकिंग मनी. एंड नॉट जस्ट दैट, we are dealing with a lot of educational clients, government clients already solvented है, वहां भी पैसा नहीं बन रहा है. Now if you can imagine कि ये 10 से 5% मार्जिन ये वाले बिजनेस अपॉर्चुनिटी में मैं कैसे पैसे बना रहा हूँ, because of workflows. And I can tell you, if I'm able to solve big baskets problem, in helping their operation team in minimizing their manual effort, in minimizing the revenue leakages, they end up paying for that service to us. Absolutely. So Agree. that is where the value addition is. कि अगर हम सिर्फ सोचेंगे कि जो टिपिकली पहले हो रहा था और वही स्पेस को कवर करना है, देन देयर इज नो गेम. अगर ये देखना है कि विद द राइजिंग कॉम्प्लेक्सिटी हाउ यू कैन गो फॉरवर्ड आउट ऑफ बॉक्स एंड सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, and and bring value on the table to them, then then they are up for the game. Got it. Anybody have any questions around it? Yeah, yes, sir. So like you mentioned right now, कि you solved various problems regarding Big Basket and DLF. So like, sir, do you have any set of standard process through that you solve the process, or like you get the initially the problem through the client and then like work with your team and then solve the problem regarding those? Right. A very great question. So basically, you have framed it in a very common way, but it's a very difficult question for a creators for a company. So it's normally typically asked from financier or a VC firm or an investor, saying कि कि कैसे कर रहे हो, if you are really trying to get yourself fit into everybody's requirement, then you are ultimately becoming a bespoke architect. कि कल उसका ये है, तो अल्टीमेटली यू आर नॉट अ प्रोडक्ट कंपनी और सर्विस कंपनी कि जैसी रिक्वायरमेंट है कि वैसा बनाना पड़ रहा है तुमको, तो तुम हर एक के रिक्वायरमेंट के साथ, व्हिच इज नॉट स्केलेबल एट ऑल, राइट? सो देयर इज अ फाइन you can say प्रोडक्ट मैनेजमेंट चॉइस, और चॉइस नहीं, इसको बोलोगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को आपको इतना मेच्योर बनाना पड़ेगा कि आप the kind of product methodology or strategy you choose, कि आप breadth cover करो, which for any product आप उतने flexibility में जाओ कि वो breadth cover करे, which is the sectors. कि अगर मैं एक प्रोडक्ट टारगेट कर रहा हूँ, which is probably for a manufacturing company के लिए, आप अगर देखो तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि मैं उनका कुछ प्रॉब्लम समझा, I try to find out कि क्या क्या जेनरिक है उस प्रॉब्लम एरिया में, which is around payments, which is I have chosen, we have to choose is very clear कि ऐसा नहीं है कि उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई प्रॉब्लम है
तो वो बोलेगा कि मेरे को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का करके दे दो और ये है। मैं वहां पे उसके लिए जूम नहीं बनाने बैठूंगा, राइट? दे कैन हैव अनलिमिटेड yes. रिक्वायरमेंट, दे कैन शेयर एनी रिक्वायरमेंट विद मी। वो बोलेगा कि मेरा प्रोक्यूरमेंट में एक प्रॉब्लम है कि सप्लाई चेन आता है, अब मैं ट्रैक नहीं कर पाता हूँ, RFID का कोई फीचर डाल सकते हो क्या? अभी कुछ दिन पहले डिस्कस भी हो रहा था सुशांत के साथ। सो दैट इज नॉट आर एरिया। तो टिपिकली ये चूज करना कि किस एरिया में ऑपरेट करना है। तो व्हाट वी हैव चूजन कि फाइनेंशियल सर्विसेज और पेमेंट्स के अराउंड जो भी प्रॉब्लम है, जो बिजनेस प्रॉब्लम है, उसको हम देखेंगे, उसमें जनरलाइज करेंगे कि वो उस इंडस्ट्री में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वो जेनरिक वर्कफ्लोज क्या है। फिर वी विल सी कि वो जेनरिक वर्कफ्लो कितने सेक्टर्स में फिट हो सकता है। तो मैं ये देखूंगा कि ये क्या B2B मार्केटप्लेस में, ये मैन्युफैक्चरिंग का वर्कफ्लो जो भी होगा B2B मार्केटप्लेस में भी फिट होता है क्या? अगर मैं B2C अभी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में बोलूं, तो मैं अगर एजुकेशन को फोकस करके एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, फॉर्म्स, सपोज ये फॉर्म की एजुकेशन को हमेशा फॉर्म निकालना पड़ता है टू फॉर ए न्यू एडमिशन और फॉर एनी इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम, वो निकालना पड़ता है। तो मैंने, और उसमें पेमेंट होता है, तो मुझे पता है ये पेमेंट्स के अराउंड है। अब उनको फॉर्म्स की टिपिकल रिक्वायरमेंट होती ही है, हमेशा उनको एक नए वेंडर के साथ ये डील करना पड़ता है, एक प्रॉब्लम है उनका, हमेशा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैंने उनको हटा दिया, मैंने DIY काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म दे दिया उसको कि अपना फॉर्म खुद ही डिजाइन कर लीजिए इन 5 मिनट्स एंड यू कैन पब्लिश इट एंड यू कैन गेट द पेमेंट ऑन द सेम फॉर्म, एवरीथिंग इज बिल्ट। अब वो फॉर्म पे मैं ये देखूंगा कि फॉर्म के कंपोनेंट्स को इतना फ्लेक्सिबल बनाऊं कि कल को मैं इंश्योरेंस के पेमेंट्स भी उसमें ले पाऊं। कि इंश्योरेंस का बंदा भी क्या करता है, एक कंपनी की एक फॉर्म भरवाएगा वो कि आपको इंश्योरेंस लेना है तो एक फॉर्म तो भरना पड़ेगा। अब उसमें मैंने ये कैपेबिलिटी भी डाल दी, सपोज कि वो आधार कार्ड वहीं पे वैलिडेट हो रहा है, वो डिजी लॉकर से अपना क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स भी फेच कर पा रहा है, और मैंने उसको और ये इंश्योरेंस के लिए काफी स्पेसिफिक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, तो इट बिकम्स मोर रेलेवेंट फॉर देम। रियल एस्टेट के लिए, एनजीओ के लिए, अब एनजीओ भी एक फॉर्म भरवाता है कि आप टिपिकली कहीं पे इंटरेस्ट शो कर रहे हो कि हाँ यू कैन डोनेट 500 रुपीज, तो 500 रुपीज डोनेट कर रहे हो तो दो ऑप्शन मिलते हैं आपको कि आप ATG सर्टिफिकेट ले सकते हो, कि आप उसको ये टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो एक टिपिकली छोटा सा फॉर्म भरते हैं, तो आपको पैन कार्ड भी डालते हैं, वहीं पे वैलिडेट हो जाता है, वहीं पे आगे बढ़ जाती है बात। तो ऑल ऑफ दीज रिक्वायर सम पार्ट ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड वर्कफ्लोज। तो मैं अगर फॉर्म सोचता हूँ तो व्हाट आई सी कि वो कितना सेक्टर एग्नोस्टिक हो सकता है, विच कवर्स ब्रेड, जो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करता है। मैं कितना डेप्थ इंश्योर कर सकता हूँ उस प्रोडक्ट के साथ कि वो रिटेंशन इंश्योर करता है कि अगर मेरे प्रोडक्ट में डेप्थ नहीं है तो कस्टमर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर प्रोडक्ट। मैं अगर बेसिक फीचर के साथ प्रोडक्ट रोल आउट कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, तो प्रॉब्ली उसके लिए कल को कोई और दूसरा प्लेयर मेरे को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अगर आप कीप इनोवेटिंग इन दैट प्रोडक्ट, कीप सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम विद दैट प्रोडक्ट, तो कल को जैसे बिग बास्केट में मैंने पहले पेमेंट गेटवे सॉल्व किया था, फिर मैं उनका पे आउट का प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर मैंने उसका ये वेंडर डीलर का प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो मेरा प्रोडक्ट जितना डीप जाता जाएगा, उसके और भी प्रॉब्लम, क्रेडिट नोट, ब्रेक नोट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो जितना डीप जाओगे उतना ज्यादा आप पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी एंड यू हैव लार्जर लेवरेज विद दैट इकोसिस्टम। तो इट्स ऑलवेज अबाउट टू चूज कि आपको क्या वर्कफ्लोज, क्या जेनरिक कंपोनेंट्स है विच इज मेकिंग यू डीपर इन दैट ये सेगमेंट, और क्या कितने फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि सो दैट यू विल एंड अप इन having opportunity in other sectors as well. Was I be able to communicate what I was trying to? Yeah. Like sir, the overall structure of solving the problem, sir, I initially wanted to know. So that pretty much summed it up. Right. And I'll tell you now, as and when whoever works in the product or strategy building exercise, as and when you grow with your experience, as and when you kind of get deeper with the understanding of your ecosystem, either customer's problem or your product's niche, or your own strength area, know-how of the ecosystem, with that capability, you would be able to do it more better. And that improvise, that should be improvised better, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट मार्केट फिट विंस। अब मैं कितना भी Yes, लेके आ sir. जाऊं, मैं अगर गूगल मैप 1990 में लॉन्च करता तो प्रॉब्ली इट वुड बी अ फेल्ड प्रोडक्ट। लेकिन
it's Mhm. something product market fit is really important. That's why if you look at WhatsApp is running and Hike is not running, right? Yeah. There are many variables which comes, Fair enough. right? Anything else? Anybody who wants to ask? Although I have few of the slides, but I think I have covered most of them in sentiments. So these are the typical things we help our businesses. So we help them to reconcile GST and everything. The single platform, complex payment terms is handled at the same place. It has smart reminders, dashboard for all the parties. डैशबोर्ड आपके डीलर्स के लिए भी है, बायर्स के लिए भी है, उसके भी डीलर्स के लिए, उसके सब मर्चेंट के लिए. All of this has been kind of already built. Anybody can raise invoice. They can see if the parties buyer supplier both. तो वो अपने आउटगोइंग और इनकमिंग इनवॉइसेस को एक जगह पे ही देख सकता है, कितना पेमेंट किसके अगेंस्ट में आया, सारा कुछ एक जगह पे रिकॉन्साइल करके देख सकता है. एंड इनवॉइस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर भी रखा, ये मैकेनिज्म्स भी बिल्ड है, so that everything is captured at one location rather than is moving. Half of the things are happening on email. Somebody is left and the information is gone. So sab nahi, Fair right? enough. Yep. Yep. So payable, receivables, uh, and the supplementary modules are evolving. So it's something which is uh, so I one in one place I mentioned that blockchain, all of these technologies also kind of getting part of this system as well somewhere. तो जैसे अभी आप देखोगे Flipkart is developing their reward or that platform on NFT platform, right? Have anyone has heard about it? So, No. so their voucher management system is going to go live or already on beta testing. So live on certain customer set probably with NAFT or blockchain based system. So Got this it. is getting tried out in some use cases. Although payments would not be using any cryptocurrency assets, but yeah, there are many workflows which is built on top of it. And probably you guys must have enrolled yourself on DLP, which is for sending SMS, and must have tied up with some of the player, some of the partner जो आपके कंपनी के बिहाफ पे एसएमएस और ईमेल्स भेजता है. तो अगर एसएमएस भेजता है तो you have to enroll yourself with DLP, और DLP is running on blockchain model. कि आप Got it. कोई भी अगर एसएमएस भेजता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्राइम और फ्रॉड्स हैपनिंग ओवर एसएमएस, तो इसको रेगुलेट किया हुआ है डीएलपी से कि कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी कंपनी अगर कोई एसएमएस भेजती है किस सेट को भेज रही है, so everything is getting monitored and there are several rules and checks runs on top of it. वो checks blockchain based पे है, तो you might see Any this somewhere. anybody who has their own industry issues and मतलब पूछ सकते हैं पेमेंट के लिए directly, and we would love to Right. cater that. Yeah, to Amit for sure, because I think Amit, the 2 3 things. First of all, really appreciate your time in this today and Saturday. You gave your quality time to us, and many of the things which I was not aware of, though I was in industry, right? The functionality of BBB, and that gives a food for thought of some of the offerings we give out to our enterprise partners, because one vendor platform specifically in um, industries is for solving some of the very curated not curated, some of the very specific problem, very curated solution which we give, right? And definitely payment is the integral part of procurement, right? When we see procurement, it is a part, right? But we cannot just shy away ki we will not think of this payment and we'll do only procurement. So many things change, which I'll discuss with offline as well. uh, Thank you so much, Amit, for your time today. Really appreciate. Yeah. Yep. No, Yep. okay. Of course, and we extended on time. I think you should given a stinker. I thought the audience is is curious to get to depth of the ecosystem. So it's great. Thanks for having me here.
And thanks for having patience to listen me. Thanks so much. No, many things, Amit, I'll just tell, okay, many things, I think most of us would have heard first time in this. So many pointers which have not added, which is part pays us in the real industries. Yeah, yeah. Okay. So, Yeah. yeah, so this is something which is actually shaping up in the industry. Even B2B payments is a core thing which has been discussed within RBI, PCI Council, and which will go through a long transformation. This will go through a huge transformation sometime. So it's the upcoming, prompt statement which they have picked up. So I see, Got it. keeping, yourself aligned with this transformational journey would actually come to your benefit if you are totally aligned and you are kind of riding on those waves. तो ये काफी हेल्प करेगा. Otherwise, sometimes what happens is कि ये तो होके रहेगा. So वो end up, probably some, businesses end up in having conflict with their kind of thought process. So वो they, they struggle on survival. Got तो it. क्या है ना Great. कि this digital public infrastructure in India, और ये अगर जिसने पहले सपोज बहुत सारी कंपनीज थी जो वही बना रही थी, राइट. अब आधार और पैन और ये सब का इतना तगड़ा कोलैबोरेशन दे दिया, सबको एक्सेस दे दिया. They died. They should have understood the trend, right? Similarly, when you look at your company, your growth, then understanding these trends are very important. Absolutely. And no You, doubt you about have it. to, you just need to get yourself aligned with these initiatives, और फिर उसको use करने का है अपने इस पे. Got it. Great. Thanks ठीक है. everyone. Thank you all. Thank you all. We'll sign off. ठीक है. Thank you. Great. Thank you. Chalo. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you.